हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो है 2021 टाटा सफारी रिव्यू, टाटाज न्यू फ्लैगशिप एसयूवी फर्स्ट ड्राइव। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कैसी बनाई है उन्होंने। तो वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा चैनल है, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, उन सब के लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। We've known it as the Tata 87X, we've known it as the Tata Buzzard, we've also known it as the Tata Gravitas. But this familiar yet unique Tata SUV is finally coming to a showroom near you, branded the all-new Tata Safari. अरे वाह, कितनी अच्छी जगह पे पार्क करके लगाई है। The original Safari had a huge fan following. Does this one have the ingredients to take the story forward? First things first, Tata says this SUV was always going to go on sale as the new Safari. The little name game, it was to keep the secret from getting out too soon. While there have been strong opinions on the name, let's judge the SUV for what it is. And what it is immediately identifiable as, at least from up front, is a larger version of the Tata Harrier. The split headlamp arrangement is shared and the only real difference is the new chrome finished tri-arrow pattern for the Safari's grille. From other angles though, you won't mistake one for the other. Designed to accommodate a third row of seats, the Safari sports a higher roofline, a longer rear overhang, features a full-size rear quarter glass, and the tail end is more upright too. Even the tail lights, though similar in treatment, are different. Adding some flavor to the Tata are its chunky roof rails that are styled to suggest a stepped roof, somewhat of a trademark element on the original Safari. In dimensions, the new Safari is 80mm taller and 63mm longer than a Harrier, though width and wheelbase are unchanged. All in all, the new Safari has a great stance that's only helped by the 18-inch diamond cut alloy wheels. And visible through the wheels are the new rear disc brakes, which I'll get to in a bit. Curiously, while the rims are a size up on the Harriers, they're still of the same design. Inside too, some things are familiar. If you've been behind the wheel of a Tata Harrier, you'll immediately feel at home in the Tata Safari. The dashboard is shared between the two models and the only points of difference is this ashwood trim on the dashboard and this new oyster white leatherette upholstery. Now, the leatherette upholstery in this light and bright shade looks really good at first glance, but I can tell you that it will be a pain to keep clean. In fact, we've been struggling to keep it clean over the course of this shoot. One of the other changes on the Safari is the switch to an electronic parking brake. The Tata Harrier's manual thrust lever-like parking brake has now gone. And what you get is this nice and easy to use button system. In other areas, everything you like about the Harrier is carried forward into the Safari as well. I really like the effect of this massive panoramic sunroof. It really opens up the Safari's cabin. I also like the mix of materials on the inside, especially the soft touch surface on the dash top. At the same time, things are not perfect. For instance, there is this jagged edge to the dashboard that keeps fouling with your left knee. And I would have also liked if Tata would have updated the infotainment system. The 8.8-inch touchscreen looks a bit small by today's standards, and even things like the rear view camera could have seen a few more pixels added. Shifting focus to the back, there's a detail that'll immediately strike a chord with fans of the original Safari. If there's one thing that connects Safaris old and new, it's got to be theatre-style seating. What that means is the middle row seats are set higher than the front row seats, and what that gets you is a great view of the world outside. Do note the Safari will be available as standard with 7 seats, while the range-topping versions will get the option of a 6-seat configuration. Now, I'm in the Safari 6-seater, and that means you get captain's chairs for the middle row. But the seat to be on is this one right here for all the adjustability that it also packs in. I'll show you. So, using this boss mode function, you can push the front seat all the way forward. You can take your seat all the way back.
and you also have the option to ये भी recline अच्छा the है, backrest. recline भी होती There's है। also a nice and comfortable armrest. एयरप्लेन की back in. तरह हो गई। The seat itself is also really comfortable. The seat cushioning is well judged, and almost everyone will find themselves very comfy on this perch. पर I say बीच में वो almost नहीं रखा हुआ everyone जैसे होता है because ना perhaps सामान people with सुन larger रखने के लिए। physiques or healthier body types like me will find the seats aren't quite as generously wide as you वही would मैं have कह liked. रही हूँ, हमारे तो ठीक There are no है। sunshades for the rear windows, Oh. and the USB slots are frustratingly hidden from view. वो तो सब में ही And what होती है। of the third row? Now, getting to the Tata Safari's third row requires some level of flexibility. अच्छा On the 6-seat version, the best way to get to the back is through this नहीं ये तो narrow प्रॉब्लम है, passage तो नीचे between नहीं होता the फिर middle row साइड की seats. डोर, साइड की जो सीट है वो स्लाइड होके What's आगे हो it जाए। like at the back? Now, Tata has ये तो boldly काफी खुली said that the Safari third row will not be an excuse for a third row, and I think there was some truth to that. बिल्कुल। Now, the front and middle row are set to a comfortable position for someone of my size, yet there is enough room Spacious for है। someone like me to be comfortable at the very back. Yes, headroom is in short supply, but anyone shorter than me will be absolutely comfortable here. Again, the seating position is not as knee up as we are used to in typical third row seats, and Tata has also done well to pack in a blower control. Oh, for the पीछे very भी last दिया, row. very nice. You also do get USB slots, अच्छा, and there's good. a nice window, though खुलती the है। aircon vents at the very back do hamper visibility. तो भी एटलीस्ट Traveling हवा with तो a आ full रही house है, does है। sadly mean no room for luggage. Lifting the heavy manually operated tailgate is a task manually and operated isn't है। worth the effort given the mere 73 liters of luggage space on offer. पीछे बहुत कम जगह है। You do have Three the rows option के to split and fold the third row seats to free up luggage room when you need. पर बड़ी The है। 7-seat version offers more flexibility with its split and fold middle row bench, and the added practicality doesn't come at the cost of comfort. The 7-seat Tata Safari will have greater appeal for buyers with larger families. Now, just as the 6-seater, it is a car that scores very well on middle passenger comfort. Now, again, you have a boss mode, so you can take the front passenger seat forward. You can move your own seat forward and backward. You can recline the backrest as you please. And the real point of distinction is just how comfortable this seat is, both in terms of back support and thigh support. This is a place you can be ओ comfortable ये for वो long, है, long अच्छा hours. ये वो वाली दिखा रहे हैं हम। So 7 Access to the seater 7-seat ध्यान ही नहीं Safari's दिया। third row is via the curb side. The aperture isn't the largest, ये but better the है, one-touch ये होना operation चाहिए। for the seat fold and tumble and the damp movement is really well executed. And This is once you're settled in, पर रोज कौन ऐसे you'll करेगा? also इतना find काम that होता है। space is more than acceptable at the very back. In fact, the third row is one of the Safari's big highlights. Before we get moving, here's a quick look at the features you get on the Tata Safari. अच्छा। Driver seat, panoramic Highlights include the panoramic sunroof, an impressive JBL sound system, and it's nice that connected tech is part of the package too. The list of safety 6 features is airbags. long as well, with ESP impressively offered as standard. टायर प्रेशर मॉनिटर भी है। The Tata Safari uses the same engine and gearboxes as the Harrier. That's a Harrier. 170 horsepower 2-liter 4-cylinder diesel engine with the option of 6-speed manual and automatic transmissions. From behind the Price wheel, क्या the है? driving experience is similar Price too. बताएंगे। There's good power, but in the case of the manual, you have to contend with a clutch that's not progressive enough and gears that need some effort to slot. ऑटोमेटिक नहीं है। Without a doubt, it's the Safari Automatic that's the one to buy. The Fiat Source 2-liter diesel engine, branded Cryotech 170 by Tata Motors, is best enjoyed with the Hyundai Source 6-speed automatic transmission. Now, this gearbox is well in tune with the characteristics of this engine. Gear shifts are always timely, they're always smooth, and when you do want to take manual control via the gear lever, you'll find that the unit is quite responsive as well. तो ऑटोमेटिक से मैनुअल भी कर सकते हैं। हम The भी कर engine सकते हैं tends to कितनी groan गाड़ियों and में। moan a bit when you're हमारा starting manual out, for different and also sounds a bit gravelly when you load it up, but things settle down quickly enough. In fact, you like this engine for its wide spread of power and how effortlessly it gets the Safari up to speed.
Driving modes, namely Eco, City and Sport that alter par, also help fine-tune the driving experience. What the Safari feels like with a full load of passengers is something we'll put to the test soon. Oh. Our quick timing runs did reveal the Safari, that's heavier by 75 kgs, to be just as brisk as the Harrier. Tata has enhanced the braking system for the Safari. The Tata Safari will carry more passengers and hence more weight than the standard Harrier, and hence it was almost imperative for it to have stronger brakes. Tata has addressed this issue by equipping the Safari with rear disc brakes. Now, if you're used to the Tata Harrier, you'll find the effectiveness of the brakes far superior on the Tata Safari. Stopping power is good, but the brakes do feel a bit mushy at the pedal. What Tata could have worked on is the steering. It feels heavy at low speeds and tends to kick back too. When you build speed, you'll also find that it's a bit inconsistent. There's slack at the straight ahead position, but give a few more degrees of lock and the big Safari will dart into another direction, and that can be disconcerting. Tata has mildly softened the suspension on the Safari for a bit more comfort. The Tata Safari is an effortless cruiser and gobbles up the miles without much fuss. But on wavy surfaces at high speeds, you will find that it's not quite as well tied down as something like a Jeep Compass. Low speed bump absorption is what the Safari does best. Like the Harrier, the Tata Safari makes light work of bad roads and potholes. In fact, this is one of those cars that tends to feel better and better the worse the road gets. And that's where its tough skin really shines through. Now for the elephant in the room. Is the new Safari Safari enough when there are no roads? With its monocoque construction and front-wheel drive layout, it's a radical departure from script to the old body-on-frame 4x4 model. And the fact is, any soul-searching missions to reclaim your life can't be too extreme. For its part, the new Safari does get wet and rough terrain response modes, and ground clearance is enough to tackle a mild trail. The good news is that the Safari's Omega architecture does support all-wheel drive, and Tata says if there's enough demand, it could consider bringing out a Safari AWD. Likely to be priced between 15 and 21 lakh rupees ex-showroom, the Safari will command a premium of about 1 lakh rupees over the Harrier. The Safari goes up against the MG Hector Plus and will also see fresh competition from the new Mahindra XUV 500 and 7-seat Hyundai Creta over the year. The new Safari is attractive, plush and well equipped, and the third row is genuinely impressive. Sure, it's not a versatile 4x4 as the original Safari was, but see it as the 3-row SUV for the family that it is, and you'll find that the new Safari scores where it matters. तो फ्रेंड्स, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हुई हूँ. अच्छा, मैं तो और टेक्निकलिटी में तो कभी जाती नहीं. जब भी मैं गाड़ी देखती हूँ ना, या कभी मुझे लेनी भी हो, मैं सिर्फ लुक्स, इंटीरियर और मुझे पसंद आ रही है उसमें बैठने में, मेरे को फील क्या रही है, वो मेरा डिपार्टमेंट होता है. और टेक्निकल वाइज भाई उसमें कितनी अच्छी है, इंजन कैसा है, वो सब हस्बैंड का होता है डिपार्टमेंट. तो मैं लुक्स में बोलूंगी मुझे तो बहुत पसंद आई है, आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड. इनसाइड से मैं ज्यादा इम्प्रेस्ड हुई हूँ. क्यों? क्योंकि एक तो वो 3 रो थी, और इंडियन फैमिलीज में जनरली जो होते हैं जॉइंट फैमिली रह रही होती हैं, आपके पेरेंट्स भी साथ में होते हैं, तो बच्चे, आपके पेरेंट्स, मेरे ख्याल से आइडल होता है अगर बड़ी गाड़ी हो. पहली वाली जो उन्होंने दिखाई थी कि पीछे वाली 3rd रो में जाने में बड़ी मुश्किल थी, तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है. पर जब उन्होंने दूसरी वाली दिखाई, मेरे ख्याल से 7 सीटर थी, उसका सिस्टम अच्छा था कि आपने बस उसको वहां से ऐसे करके कुछ क्लिप्स आया, उसको करोगे वो अपने आप फोल्ड हो जाएगी और फिर आप जा सकते हो. पर उससे भी बेटर होता अगर कोई बटन हो, बटन दबाया वो अपने आप मूव होगी, अपने आप वो होके और आप अंदर जा सकते हो. क्योंकि यहाँ पे ऐसी वैन्स भी होती है, और इंडिया में भी होंगी वैन्स, होंडा की, टोयोटा की, जो इस टाइप से ऑटोमेटिक होती हैं. पर बनाई बहुत अच्छी गाड़ी थी, और मुझे तो कलर जो उन्होंने इंटीरियर दिखाया था ना, वो ही बहुत अच्छा लगा था. और जैसे उन्होंने और उसमें मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि जो 3rd रो है उनका अपना वेंट है और अपने आप वो कंट्रोल भी कर सकते हो, और स्पेस भी बहुत थी. नहीं तो जनरली आप 3 रो की जितनी भी गाड़ियां देखोगे ना, उनमें इतनी कम स्पेस होती है कि बच्चा ही, कोई छोटा बच्चा ही बैठ सकता है, और वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा क्रैम्प शायद फील करे. तो इस केस में स्पेशियस बहुत था, तो फैंटास्टिक.
राइट, सो अच्छा वीडियो था, काफी अच्छा लगा देखकर। अब हर बात यही होती है कि लोगों को देखना चाहिए कॉस्ट वर्सेस क्या मिल रहा है आपको, राइट, कितने की गाड़ी है और उसमें क्या है। तो कंपैरेटिवली जैसे 15 लाख कह रहे हैं, मुझे तो काफी अच्छी गाड़ी लगी, काफी बड़ा साइज है। 15 लाख मीन्स कितना डॉलर, कोई $20,000। तो जो मतलब काफी अच्छी गाड़ी लग रही है। आप यूएस से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां महंगी होती हैं, बहुत महंगी होती हैं। तो 20,000 में तो कार भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जो है आप कंपेयर मत करिए क्योंकि यहाँ कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उसमें चीजें अलग हैं। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा लगा देखकर कि इतनी बड़ी गाड़ी जो है 15 लाख की दे रहे हैं। 3 सीटर है, दैट इज गुड। और नॉर्मली जैसे वो कह रहे हैं अभी फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं है, मगर आप ऐड कर सकते। अभी फ्रंट व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। ऑल व्हील ड्राइव जो है उसके लिए ज्यादा डिमांड होगी। अगर आप बाकी ऑफ रोड में जाते हैं तो आपको ऑल व्हील ड्राइव लेनी चाहिए, जैसे जीप में होती है, किसी नॉर्मल महिंद्रा जीप या दूसरी चीज ऑल व्हील ड्राइव होती है, तो इसमें ले सकते हैं। अगर आपको वाकई ही जाना है सफारी के लिए, नॉर्मली लोग जो होते हैं बड़ी गाड़ी लेते हैं, बट मैंने पता नहीं कितने लोग जाते हैं सफारी पे। जैसे हमने एक बड़ी गाड़ी ली है, हम कभी सफारी में जिंदगी में एक बार गए हैं, जबकि हमने कभी यूज नहीं किया। तो वो मेरे ख्याल से लोगों को देखना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में कभी सफारी पे नहीं जाएंगे, एक बार जाएंगे, तो जरूरत नहीं है ऑल व्हील ड्राइव की। और अगर आप बहुत तेज चलाते हैं, थोड़े रिस्की ड्राइवर हैं, तब शायद आपको जो है डिस्क ब्रेक्स चाहिए सब में। मगर अगर आप शांति से चलाने वाले हैं तो जैसे उन्होंने डिस्क ब्रेक दी हैं मेरे ख्याल से फ्रंट में, दैट इज गुड इनफ। मगर आप एग्रेसिव हैं तो शायद आपको डिस्क ब्रेक चाहिए होंगी, चारों डिस्क ब्रेक, और आपको ऑल व्हील ड्राइव चाहिए होगी। उसकी जो रूफ थी वो बड़ी जबरदस्त थी, वो भी बड़ी अच्छी थी, दैट वाज अमेजिंग, डबल थी बिल्कुल। और अगर आप बहुत ही एग्रेसिव हैं और आपको बहुत तेजी से स्पीड पकड़नी होती है, रेड लाइट से आपकी आदत ऐसी है कि आप बहुत तेज आए, तो हो सकता है आप थोड़ी ज्यादा हॉर्स पावर भी ले सकते हैं। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि जो फैमिली वाले लोग हैं, शांति प्रिय, उनके लिए ग्रेट गाड़ी है। और जो मगर जो स्पोर्टी लोग हैं उनके लिए शायद उनको पता ही होगा कि उनको डिफरेंट काइंड ऑफ कार चाहिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मोस्टली फैमिली कार लग रही है और बहुत वैल्यू दी है उन्होंने 15 लाख में। अमेजिंग। मैं तो देख के कि इतना कुछ दे रहे हैं, एक 15 लाख में बहुत ही मतलब सस्ती गाड़ी बनाई है, विद जो भी फीचर्स बेसिकली आपको चाहिए वो सब दिए। हाँ, मतलब सस्ती, मतलब इसकी साइज देखते हुए 15 लाख में अच्छी गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी थी, इम्प्रेसिव है। तो फ्रेंड्स बताना आपको कैसी लगी। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।